Hi everyone, once again, welcome to all of you. This is class 10 and chapter is going on polynomials, chapter number 2. In exercise 2.3, based on division division polynomials and division logarithm for polynomials. In the previous class 9 standard, in the polynomials chapter, we can find the polynomials of zeros, but here calculations and solving of the division algorithm for polynomials with the help of long division method. Okay, so what is the dividend, divisor, quotient and remainder? ठीक, you know very well, I hope, because if take any two numbers and two polynomials, like if px and qx are any two polynomials with gx is not equal to 0, gx is not equal to 0 because gx is the denominator here and px is numerator, then we can find polynomials qx and rx such that qx is quotient, rx is remainder. Okay, so we can write like this. This is px is equal to, this is px is equal to two numbers r. Okay, so we can write gx is equal to px into quotient qx plus remainder rx. Okay, here gx is dividend and px divisor into qx is quotient mentioned in bracket and plus rx is remainder. Rx is remainder. Okay, so what is the relation between and what is the division algorithm for polynomials? So this is known as dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. This result is known as this result is known as division algorithm of given polynomials. Given polynomials. Okay. So in exercise 2.3, more than two or three condition is here. First of all, divide with the help of the long division method and remainder theorem. But in class 9, you have already studied remainder theorem. So what is the remainder theorem? If any polynomial px is zeros of the another polynomial qx, so taking the qx remainder is 0, means if take any polynomial px is equal to x cube plus x square plus x divided by another polynomial qx or gx is equal to only x. So in this polynomial, apply the remainder theorem. Apply the remainder theorem by remainder theorem. So
qx taking is equal to 0, qx taking is equal to 0, or px divided by qx simply. So we can write value of px means x cube plus x square plus x and total upon qx. Qx means only x. So here from numerator this is cubic, quadratic, linear. So taking x common, so x square plus x plus 1 in balance x. X cancel out. So here x square plus x plus 1. What is this? This is quotient. This is quotient. But here remainder is missing. Here remainder is missing. But this is quotient. And now take same polynomial again. Px is equal to x cube plus x square plus x is the factor are divided by qx is equal to x minus 1. Okay, so now let qx is equal to 0, then x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1. So here x is equal to 1. Putting this value in given polynomial px. So what is the value of px? This. So here x is equal to 1. So there x is equal to 1 like p1, and in place of x is 1. So 1 is cube plus 1 square and x equals to 1. 1 cube means 1, 1 square means 1, and plus 1 means 1. So this is 3. So what is 3? 3 is a remainder here. 3 is a remainder here, and here x square plus x plus 1 is quotient. So here 3 is remainder. 3 is remainder. In both of calculation, in both of questions, x square plus x plus 1 and remainder is 3. Both are condition. Apply this formula. Apply this formula. Which formula? Division logarithms for polynomials. Okay. So dividend. What is dividend? This is dividend. Divisor. Divisor. Quotient. Quotient. And here remainder. Yes. Okay. So verifying the values for the given logarithm conditions, division of logarithm conditions, तो आपका आंसर क्या होगा? फुलफिल होगा. तो इन एक्सरसाइज 2.3 में बेसिकली हमें अपना क्या करना है कि पॉलिनोमियल्स को लॉन्ग डिवीजन मेथड के बिहाफ पे सॉल्व करना है, एंड रियर केस में हम अपने लेवल से रिमाइंडर का भी यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट. ओके. So in exercise 2.3 question number 1, divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following. Find the quotient and remainder in each of the following. So take first part from question number 1. I am going to solve in front of you like question number 1, first part. Divide the polynomial px by the polynomial gx. The given polynomial are the given polynomials are px is equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3 comma and another polynomial gx is equal to
the main requirement is px divided by gx, px divided by gx, divide the polynomial and find the quotient and remainder। तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले कौन सी ऐसी कंडीशन पढ़ी है कि इसमें क्वोशिएंट एज वेल एज रिमाइंडर बोथ दोनों कंडीशन में ऑब्टेन हो जाए बाय द डिवीजन लॉगरिथम मेथड, बाय द डिवीजन लॉगरिथम मेथड। सो applying division method, so this is x cube minus 3x square plus 5x, 3x square minus 3x square plus 5x minus 3 and divisor is x square minus 2. Divisor is x square minus 2. So first of all, check and arrange the polynomials in the degrees order, like 3, 2, 1, 0. This is right. And here also x square then constant value. So यहाँ क्वोशिएंट पे हम लोग कौन सी वैल्यूज अप्लाई करते हैं? डिवाइजर को हम क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू डिवीजन लॉगरिथम। डिवाइजर को क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन होता है? डिविडेंड ऑब्टेन होता है। तो हियर 1 देयर 1, तो यहाँ 1 की वैल्यू रहेगी x क्यूब बट हियर x स्क्वायर, फाइनली हमको क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? x। सो x का अपने डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे x क्यूब एंड x मल्टीप्लाई बाय -2 मींस -2x। ओके, फाइनली कैंसिल करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल आउट, बट हियर -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x एंड अरेंज करेंगे प्लस 5x को नोट करेंगे। तो इसकी अरेंजिंग क्या हो जाएगी? -3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 7x। सो अगेन सेट करेंगे क्वोशिएंट्स पे कौन सी वैल्यू आएगी? हियर माइनस देयर प्लस, सो टेकिंग माइनस, हियर 3 देयर 1, so 3 1s are 3, x स्क्वायर मैच्ड। तो -3 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना चाहिए हमको अपने डिवाइजर पे, तो -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6, 3 2s are 6, अगेन सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस टोटल कैंसिल आउट and we can write plus 7x minus 6x and last value -3 noted down. So we can again arrange 7x minus 6 minus 3 means -9. Here 7, there 1, so taking positive 7 and x square and x square. Okay, so here क्या हुआ कि डिवाइजर की डिग्री मैक्सिमम हो गई और हमारे पास रिमाइंडर की डिग्री कम हो गई। तो अब यहाँ पर हमको अपने क्वोशिएंट्स को टैली करना पड़ेगा। जब क्वोशिएंट्स को टैली करेंगे तो हम यहाँ पर फिर अरेंज करना पड़ेगा बाय 2 के लिए, फिर हमको अरेंज करना पड़ेगा बाय 2 के लिए। ओके, वेलकम बैक। सो हियर lastly remainder is 7x minus 9 because here degree is 1 and their degree is 2, so x square is greater than x and lastly quotient is x minus 3। तो ओवरऑल जब हमारा रिमाइंडर का वेरिएबल की पावर डिवाइजर के पावर से लेस हो जाएगी तो हम अपना डिविडेंड प्रोसेस वहीं स्टॉप कर देंगे। तो फाइनली we can say that quotient is
x minus 3 and remainder is minus 6 minus 3 is converted minus 9, 7x minus 9. This is the answer of this question. Okay, and now if you are interested verifying your answer, so apply this formula. Apply this formula. What? Division logarithm, like dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So here remainder 7x minus 9 mentioned here, and divisor x square minus 2 here, and quotient x minus 3. Then we obtain dividend. What is the value of dividend? This is dividend, x cube minus 3x square plus 5x minus 3. Okay, so in this formula, putting the values of quotient, remainder and divisor, then we get dividend, like x cube minus 3x square plus 5x minus 3. Okay, this process apply all the questions in this chapter, and question number 1 especially divide the polynomial px by the polynomial gx. And question number 2, check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. Okay, check whether the first polynomial is the factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. Okay, and x square plus x. Question number first, second part. Question number first, second part. Because in this quotient obtained in quadratic form, because this is the multimonial. Because this is the multimonial. So again, the given polynomials are, first px is equal to multimonials like x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5. Please can check x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5. And gx is equal to x square plus x minus x square plus 1 minus x. So check whether px is divided by gx, first of all by long division method. So long division method means this is dividend x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5, and divisor is x square plus 1 minus x. So first of all rearrange the gx, x square minus x plus 1, and this is the quotient place. तो once again क्वेश्चंस की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चंस में हम वो वैल्यू मेंशन करेंगे जिसका हम प्रोडक्ट डिवाइजर से लेंगे, और डिवाइजर से जो हमें मिलेगा वो टैली होना चाहिए डिविडेंड से. तो हियर x टू द पावर 4 बट देयर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर में हम किस चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे? हमको x की पावर 4 मिल जाए x स्क्वायर से. सो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म रेस्पेक्टिवली x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर मींस x टू द पावर 4, x square multiplied by minus x means minus x cube, and x square multiplied by plus 1, so plus x square.
clearly. So again subtracted, so x to the power 4 cancel out. Here this is minus 3x square, minus 3x square, एंड सब्ट्रैक्टिंग, जैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब एंड प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगेन रीअरेंज, मैक्सिमम डिग्री इज 3, सो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस 4x नोटेड डाउन. हम 4x क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये रिजॉल्व हो गया, ये रिजॉल्व हो गया, ये सब रिजॉल्व हो गया. 4x को हमने नोट कर लिया. ऑर्डर भी सही है, 3 2 1 x क्यूब बट x स्क्वायर, सो प्लस मल्टीप्लाई बाई x. ओके, सो x से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x स्क्वायर, x वन जा x. ऑटोमेटिकली सीक्वेंस सही हो गया. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग x क्यूब कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कंबाइंड माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x माइनस x मीन्स प्लस 3x एंड लास्ट टर्म प्लस 5 नोटेड डाउन. Here minus, there plus, so taking minus sign, and here 3, there 1, so 3 ones are 3, and this is x square, this is also x square. So not a single variable multiplied in this quotient, only minus 3. So only minus 3 multiplied by this divisor, minus 3x square minus minus plus 3x minus 3 minus 1 plus minus 3 ones are 3. Okay, after subtracting totally x square variable cancel out, minus plus minus minus plus minus again cancel out, and here minus minus plus minus minus plus 5 plus 3 means 8, 5 plus 3 means 8 simply. So what is the value of quotient of this polynomial? Quotient is x square plus x minus 3 and remainder is only 8. So in this question, divisor x square minus x plus 1, quotient x square plus x minus 3 and remainder 8. तो रिमाइंडर, क्वोशंट और डिवाइजर, इन सारी 3 वैल्यूज को अगर हम लोग अपने डिवीजन लॉगरिथम्स मेथड में कंबाइन करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेंड होगा, डिविडेंड ऑब्टेंड होगा. क्या ऑब्टेंड होगा, डिविडेंड होगा. ठीक. सो आफ्टर दिस क्लास अटेम्प्ट योरसेल्फ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ the terms. This is quotient, remainder and divisor. Is right or wrong? Okay. And question number 2, check whether the first polynomial is the factor of the second polynomial. So in these questions you can apply the remainder theorem as well as long division method. ठीक. And question number 3, obtain all the other zeros of this. If 2 zeros of this, then find the other zeros. आपको ये फाइंड आउट करना है. ठीक है. बिकॉज इन दिस पॉलिनोमियल मैक्सिमम डिग्री इज 4. इन क्वेश्चन नंबर 3 द गिवन पॉलिनोमियल इज मैक्सिमम डिग्री इज 4. सो कितने पॉसिबल जीरोज होने चाहिए, 4 जीरोज होने चाहिए. तो 2 zeros are given, rest 2 zeros we have calculated. Okay. So today in this class up to question number 3 and question number 1 rest of all the parts, and question number 2 remaining 2 parts, and question number 3 also. This is the homework for you. But in the next class question number 4 and question number 5, last 2 question we will be discussed. Okay, thank you so much.